love you so much, so much. And Don't get emotional. Actually, oh God, she is emotional. Hmm. She's getting emotional, man. हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग जिसका नाम है इंग्लिश की माँ की सुन के आपको समझ में आ गया कोई ना कोई चैलेंज है, और ये चैलेंज है इंग्लिश से रिलेटेड। वैसे तो मेरे पास तो देखो हंसी आ गई इसको, इंग्लिश का नाम सुन के ही मतलब इसकी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली देखो भाई लोग, मुझे भी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, और इसका तो और भी बुरा हाल है इंग्लिश में। तो आज का चैलेंज ये है कि आज हमें पूरे दिन इंग्लिश में बात करनी है जब हम कैमरे में रहेंगे। अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, उसके बाद जब मैं आपको टाइम बताऊंगा उसके बाद से हम दोनों को तो कम से कम इंग्लिश में बात करना है, आप लोगों से भी। और इवन मैं तेरे को नियम बता दूं, है ना, इसके नियम भाई लोग कुछ इस प्रकार है। ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट मतलब किसी को गिफ्ट नहीं करना। अगर जीत गया तो ये मुझे 500 देंगी, मतलब अगर ये हार गई पहले सुनो, ये टीचर है और इंग्लिश पढ़ाते हो, और मैं नहीं तो भाई, इंग्लिश पढ़ाना और इंग्लिश बोलना दोनों ही बात बहुत अलग होती है। मैंने भी कितने जन्मों से इंग्लिश नहीं बोली, तो इसी बहाने इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग भी समझ में आएगा कि हमारी इंग्लिश कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी है ना। तो चुप तो रहो, 2 मिनट शांत रहो। तो भाई लोग, तो चैलेंज कुछ इस प्रकार है कि हमें आज के पूरे दिन इंग्लिश बोलना है, इवन ब्लॉग्स में, और इवन जब कुछ काम भी कर रहे होंगे। और तुम सुन ले भाई नियम, 500 रुपये देने पड़ेंगे अगर तू हार गई, तूने हिंदी बोल दी तो। हाँ, और जैसे कि मतलब ये अगर पापा को खाना भी दे रही है तो उनको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं पापा रोटी ले लो, नो पापा 1 चपाती और 2 चपाती, ऐसे करके कुछ बात करनी पड़ेगी। इवन घर में आंटी से बात करे, चाहे किसी भाभी से बात करे, नहीं ये नियम है। नियम है बेटा, नियम है तो नियम है, वो तो नियम मानने पड़ेंगे, नहीं तो ये हार मानने वाली बात पहले मत करो। मैं भी तो हूँ भाई, मुझे भी तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी ना। मैं भी भाभी से बोलूंगा, मैं भी आंटी से, बाहर से कोई अगर दूध लेने भी आएगा तो मेरे को भी इंग्लिश बोलनी, ये कोई से नहीं सेम मिलते, नियम मेरे है। को तो कितने लोगों से मिलना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो भाई ऐसा थोड़ा ना है। और मैं तुम्हारे साथ हमेशा तो रहूंगा नहीं, ट्यूशन जाऊंगा तो आप हिंदी बोल लेना। लेकिन अगर मैंने को देख लिया, मैंने पकड़ लिया कि तुम हिंदी में मेरे सामने हिंदी में अगर बात कर रही हो, तो फिर वो फाइन हो जाएगा आपको 500 रुपये। और हाँ, आपको 2 वो मिलेंगी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, 2 पावर मिलेंगी कि अगर गलती से अगर हिंदी निकल जाए तो मैं टोक दूं, तो फिर वापस से वो इंग्लिश सुधार करनी है। दूसरी बार गलती हो गई, दूसरी बार भी सुधार करनी है। अगर तीसरी बार हो गई तो आपको सीधे नगद 500 रुपये देने पड़े ऑन कैमरा के सामने। या मैं अगर हार जाता तो मैं आपको 500 दूंगा और आप हार जाओगे तो। और अगर दोनों तो इंग्लिश आने से नहीं होता, इंग्लिश आने से नहीं होता, ये होती शर्म की बात है। क्योंकि हमारे यहाँ पे, हमारे समाज में आज भी इंग्लिश बोलना, अगर किसी के सामने इंग्लिश बोल तो बोले कि पता नहीं क्या दिखावा कर रहा है। तो आज हम मजा आएगा आपको बहुत। अभी देखो कितना मजा आ रहा है, कितनी हंसी आ रही है, तो देखो मजा आएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड भाई, एक्सेप्टेड बोल दे एक बार, जल्दी बोल, जल्दी फटाफट ऐसे बोल, एक्सेप्टेड। हाँ, तो चैलेंज एक्सेप्टेड। और अब भी देखते हैं, मैं तो चाहता हूँ ये जीते भाई, ये जीते है ना, मैं हार जाऊँ। ठीक है, चलो देखते हैं, फिर अगले सीन में मिलते हैं, मजा आएगा बहुत। Hello friends, so as you know that challenge is accepted by my wife and me also. So we have to communicate in English from now. And as you know that today is Tuesday, and on Tuesday I worship Lord Hanuman. So Kusum, what are you doing? What are you doing? Tell me. Why are you so silent? First time in my life I have ever seen my wife in such a peace form. Right? She's laughing like anything. So what are you doing? I'm cleaning my kitchen. Actually, it's not cleaning, it's sweeping. Okay. So I think it's a good and knowledgeable challenge. So let's take it to the next scene. First mistake. So finally friends, I have completed my puja part, and now we will see that what's my wife is cooking for me. As you know that Tuesday is my fast day, so let us see that what I will eat. Okay, now we will meet onto the next scene. So friends, my wife is here, so she will tell you that what are you feeling right now, what she is feeling right now. So what are you feeling, Kusum? You are communicating in English for the first time, I think, in your life. So how are you feeling? I'm feeling good. Good or Because
so many new things, new things. are you learning? Yes. Actually, we are going for a bank work today, but I think she will not go right now because she is Why? in a challenge. No. So you want to go? Yes, I want Okay. to go and I ride bike and you sit my Okay. back. Okay. And you will also communicate in English No. in front of bank No. bank employees. No. You have to do it. Otherwise, you will lose the challenge. No. You You will will lose the speak. challenge. You will speak. No, I will also speak, and you can. No. You also have to speak. You also will have to speak. You will speak No, only. no. It's her Otherwise work. It's her work. It's her account. So why will I communicate? Tell me, guys. Because I am No, you are communicating. not perfect in No, English. she is still good. She's still good, and I am also not perfect in English. But at least I am trying, na. What are you cooking for me? I will speak in English. Bank. Yes. There. The whole crowd will laugh on you. Laugh me. No, that's the thing, na. That's the thing. I want to give message in front of you all viewers that everyone will laugh. So what's the problem in it? What's the big deal in it? You will have that confidence. You will have that courage to speak in a crowd, and that's how you learn. So actually, what are you cooking for me? Tell me. Millet khichdi. Okay, I want millet khichdi, but not in huge amount. Just one plate, right? So friends, as you know that I am in a winning position right now. As you've seen in the previous scene, when she was serving the food to my father, to her father also. So she speak a little sentence in Hindi. So I am in a winning position. So I'm in a winning position by 1-0, as you know. So I'm winning 500 rupees today. So we'll see you in the next scene. Thank you so much. How she's working hard, and she's trying. At least she's trying. So learn from her. Where are you going, beta? Where are you going? Tell me. I'm Not going anywhere. Anywhere. Just park a scooty in outside. She's just parking the scooty, and actually I'm very happy that she is at least trying. So it's good. Inside the house. Outside. Where? Okay, park it now. Slow and steady. Actually, she learned a lot. Okay, friends, we are here, and we will make our challenge more interesting, more funny, and more difficult for us. And definitely, you will entertain in it. So the challenge is we have to talk to each other. Not talk to each other. We have to express our love for her, and she will express her love to me in English or for 1 minute. So are you ready? And are you ready? She's refusing, guys, but she will ready. She is a brave girl. So she will definitely ready. So who is going first? I or you? Why? Ladies first, na? No. Okay. So on the next challenge you will go first, right? Yes. Accepted? Yes. It will be more difficult for you. Okay. Okay. Now I am going first. So I will express my love to her in 1 minute. So Kusum, I am very fortunate to have you in my life. I am so lucky that you are in my life, and I am really, really thankful to God. And I have no words to express my love in front of you. You are really dear for me, and I love you, Kusum. I love you, Kusum. And Love you too. I love you, Kusum, and I am not anything. I cannot live without you. You are like a oxygen for me, and it's a real thing. It's a real thing. I am telling in front of camera, in front of viewers, and it's honestly I'm saying that. Not I'm just showing off, but you are a really good person that you are in my life, and thank you so much to enter in my life. So here we go, and now her time. So it's Kusum's turns now. Now what do you want to say for me in English? Now
Your time starts now. First of all, he's a very good man, Thank and you. I'm very lucky. I'm very lucky to have you in my life, Thank you so much. and thank for God. So coming into my life, and Go you on, well done. and you are my whole world, and I love you so much, so much. And Don't get emotional. Actually, oh God, she is emotional. She's getting emotional, man. Thank you. I'm proud of you that you are working really hard. You're working really hard. Go on, go on. Some more words. Still a half a minute left. Still a half minute left. Please tell me. Tell me. Tell me. Good going, beta. Good going. Don't get emotional. Don't get sad. I love you. Still a half minute left. I will not leave you. Always with me, and you always support me, my all condition and my all problems. Always support me. That's it, beta. Actually, she gets emotional. Otherwise, she will tell more things about me. So I'm really thankful to God and really proud of her because she's such a lovely girl. Sorry, guys, she gets emotional, but so here we go. We will. Hello, friends. After making her emotional, we are ready with our lunch. So, see, guys. She makes fruit raita for me. It's a fruit raita, and this is a millet khichdi. So we will see you after taking lunch. So take care. It's really delicious. Thank you so much, Kusum. So finally, guys, I have taken my lunch. Now I am going for my home tuition. And after that, after my home tuition, there is another surprise for you. The round 2 of our challenge, of our English challenge. And as you've seen in round 1, she gets emotional. And let us see that in round 2 how she will express. So our round 2 will be our round 2 will happen after my coaching timing. So are you ready, guys? Actually, I am ready. So, Kusum, are you ready? Kusum, are you ready for round 2? You will win or lose? Win. Okay. So she is saying that she will win. So let us see. Now, okay, friends. Then meet you after coaching timing. So thank you so much. So now, friends, my coaching is over now. So we are ready for the second round of our challenge, of our English speaking challenge. So second round is all about phone. Okay, so each one of us call our friend or any relative, and we will try to talk we will try to communicate them in English. So first, as we promise, our wife is going, and I will call her best friend, and she will talk to her for 2 minutes in English, and without saying about the challenge, right? Okay. Now, Kusum, are you ready? Yes, she is ready. She is born ready, right? Now, friends, we are ready, and I am calling her best friend Preeti. So the call, don't worry, the call will be on loudspeaker, and definitely we will entertain you. पता नहीं what's he saying, I don't know. Hello, कौन? I am Kusum.
हेलो हाँ बोलो। ये तुमने दूसरे नंबर का फोन लगा रही तुम। तुम्हारा मोबाइल कहाँ गया? हेलो। हेलो व्हाट आर यू डूइंग? बोले तुम्हारा नंबर कहाँ गया? माय मोबाइल इज बिजी. ब्लॉग बनाने में। हाँ हो। आई एम इन ससुराल. आज कैसे याद आ गई भैया? आई एम ऑलवेज रिमेम्बर यू बेबी. जानेंगे तो। मेरी याद अब तुम्हें कब से आने लगी भैया? अरे क्या हुआ? ओ और व्हाट आर यू डूइंग? हिंदी में बात कर लो तुम। Not today I am speak only English. It's तुम आई थी क्या और अभी बीच में? no. मुझे तो लगा था कि आई। No. I am not coming. नहीं रह जाओ तुम तो आओ ही मत। आईब्रो वाले पड़ गए या? I love Bhopal and I live in Bhopal always. आई लव भोपाल। कभी लव मत करो भोपाल को और भूल जाओ। चलो बाय बाय. क्या हुआ ये? So guys, do you love the game? The round 2 and she performed it really well. Now it's my turn. So who do you want that I call? Now it's your turn. Are So- you ready? Yes, I'm ready. I'm born ready. And I will call Ashutosh Bhaiya. Okay, so it's a really easy task for me. So let us see how Call it him. goes. Okay. Now she's calling Ashutosh Bhaiya, and I'm really nervous. Ashutosh Bhaiya. And call and speak. हाँ भैया, how are you? बढ़िया बढ़िया। What's going on? हाँ? What's going on? कुछ नहीं यार, घर पे ही था। So when are you coming to our house? When? क्यों, कुछ काम है क्या? No, just it's a long time na that ओके। you haven't come to our place. वाह, क्या इंग्लिश। No, I'm just trying. I'm just trying my level best. अच्छा, क्या दुबई वही जा रहा है क्या? दुबई जा रहा है क्या? No. Not going anywhere. Just trying. Just trying. Keep it up। So when are you coming? चलो शाम को आते हैं। Then meet you at evening, in the evening. Okay. He also completed his task. Friend, it's lots of fun, and we are just bored of this English and shit and all, so we will again in Hindi. So okay, तो भाई कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। आज हमने छोटा सा चैलेंज उठाया था इंग्लिश में। देखो हम इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल नहीं है, इंग्लिश मुझे भी इतनी अच्छी नहीं आती, इनको भी इतनी अच्छी नहीं आती, मुझे अच्छी आती नहीं, मुझे आती लेकिन नहीं है। हमने कोशिश करी थी कि इंग्लिश में हम बात कर सकें, है ना। इनने तो मेरे को बहुत आसान टास्क दिया, मुझे तो लग रहा कम से कम कुछ ऐसे लड़कियों से बात कराएंगी, कितना अच्छा टास्क दे सकती थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। और मैंने भी इनको आसान टास्क ही दिया, मतलब फ्रेंड से बात करने को बोला और किसी से नहीं बात करने को बोला।
तो मज़ा आया भाई, हम लोगों ने ट्राई किया, हमारे लिए तो यही ज़रूरी है। हमने टूटी फूटी जैसी भी इंग्लिश बोली, लेकिन कम से कम आप लोगों को कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना। इस तरीके से आप बोल बोल के सीख पाएंगे, ऐसा नहीं सीख पाएंगे कभी भी कि आप डर एम्बेरस फील हो। नहीं हो ये तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, फिर भी इसने बोला, तो आपको सीखने से बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो भैया चलो आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं ब्लॉग में कल वाले ब्लॉग में, है ना। उल्टा बोल दिया, इंग्लिश में पूरा सिस्टम ही हिल गया यार मेरा, तो मतलब उल्टा चल रहा है सब कुछ, है ना। ठीक है भाई, सबको जय जय सिया राम, आप सब लोग खुश रहें, ऐसे ही भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। थैंक यू सो मच।